এখন ৰাজ্য অথবা দেশ উন্নয়নৰ দিশত আগুৱাই যাবলৈ হ'লে উন্নত হ'বই লাগিব যোগাযোগ ব্যৱস্থা। ভাৰতৰ দৰে তৃতীয় বিশ্বৰ দেশত মুঠ জনসংখ্যাৰ বৃহৎ সংখ্যক লোকে দূৰ দূৰণিৰ ভ্ৰমণৰ বাবে সদায় প্ৰাধান্য দিয়ে ৰেল সেৱা। দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত উন্নত ৰেল সেৱাই যোগাযোগ ব্যৱস্থা বহু পৰিমাণে সুচল কৰিছে। কিন্তু বৰ্হি ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমত এতিয়াও বহু জিলাত সুচল হোৱা নাই ৰেল সেৱা। এতিয়াও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ বহু স্থানত হোৱা নাই ৰেল যোগাযোগ। रीओपनिंग ऑफ रेल कलेक्शन बिटवीन फकीरा ग्राम एंड धुबरी, ये मेरा सेक्टर है, मेरा एरिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रेन फ्रॉम जोगीखोपा टू मेघानंद। ৰাজ্যৰ মূল চহৰৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৰেল যোগাযোগ হৈছে যদিও অসমৰ আভ্যন্তৰীণ ৰেল যোগাযোগ ব্যৱস্থা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। ৰাজ্যৰ অনুন্নত ৰেল যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ কথা সংসদত বাৰে বাৰে উত্থাপন কৰি আহিছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। लेकिन सर आपने खुद कहा है कि बहुत से प्रोजेक्ट जो 30 साल से द रिजल्ट कम्स विथ लेस देन 50%। ৰেল যোগাযোগ উন্নত কৰিবলৈ প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰিছে ঠিকেই, কিন্তু আধৰুৱা হৈ আছে বহুকেইটা প্ৰকল্পৰ কাম। সুযোগ পালেই সংসদত বাৰে বাৰে এই কথা উত্থাপন কৰি আহিছে ধুবুৰীৰ সাংসদগৰাকীয়ে। रेलवे में जो लाखों मील मुल्क के इस कोने से उस कोने से हमारी बच्चियां सफर करती है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कोई मेजरमेंट ऐसा रखिए कि कम से कम उनकी इज्जत आबरू की हिफाजत हो और वो एजुकेशन हासिल कर सके। ৰেল যাত্ৰা সুৰক্ষিত হ'ব লাগে। বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ৰেল যাত্ৰা সুৰক্ষিত কৰাক লৈ সংসদত গুৰুত্বপূৰ্ণ যুক্তি দাঙি ধৰিছিল সাংসদগৰাকীয়ে। আনকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক টিকটৰ মূল্যৰ ৰেহাই দিয়াৰো পোষকতা কৰিছিল বদৰুদ্দিন আজমলে। उन बच्चियों को जो लाखों मील इधर से उधर जाते हैं, सब गरीब फैमिली से ज़्यादा आते हैं। जो गरीबी के रेखा नीचे बच्चियाँ हों, वो जब पढ़ने के लिए मुल्क के इस कोने से उस कोने से जाते हैं, क्या उनके लिए स्पेशल कंसीडरेशन आप कर सकते हैं? मैं समझता हूँ महिला जितनी मेरी बहनें हैं इस मामले में मुझे सपोर्ट करेंगी कि उन बच्चियों को डिस्काउंट कंसेशन कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, कंसेशन मिलना चाहिए। বিগত 30 বছৰত ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল 679টা ৰেল প্ৰকল্প। তাৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈছে 317টা প্ৰকল্প। 59টা প্ৰকল্প কাৰ্যকৰীয়ে নহল। As Honorable Railway Minister himself accepted this fact, 679 projects were sanctioned, but only 317 been completed, while 359 projects are remain uncompleted. इसके ऊपर आप ध्यान देंगे। যি সময়ত দেশৰ আন কেইবাখনো ৰাজ্যৰ ৰেল ষ্টেচন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মানদণ্ডৰ কৰাৰ প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, সেই সময়ত কিয় গুৱাহাটীৰ ৰেল ষ্টেচনৰ কথা নাভাবিলে কেন্দ্ৰই? তাক লৈ প্ৰশ্ন সাংসদগৰাকীৰ। आपने अहमदाबाद और लखनऊ को स्पेशल सेक्टर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ले जाना चाह रहे हैं। मैं गुवाहाटी के बारे में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गुवाहाटी के बारे में आप जरूर सोचें और इसको इसके अंदर शामिल करें। যোগীঘোপাৰ পৰা মানকাছৰ হৈ মহেন্দ্ৰগঞ্জলৈ নতুন ৰেল সেৱাৰ প্ৰস্তাৱ, ধুবুৰীৰ পৰা দ্বৈত লাইনৰ প্ৰস্তাৱ, ধুবুৰীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ জনশতাব্দী, ধুবুৰীৰ পৰা কলকাতালৈ ৰেল সেৱাৰ প্ৰস্তাৱ, নিউ বঙাইগাঁও ফকীৰাগাম ৰঙিয়াৰ পৰা ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তলৈ ৰেল যোগাযোগ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ সংসদত দাবী উত্থাপন কৰিছিল মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। मणिपुर से सिलचर एक ऐसा रेलवे कनेक्शन है जो सुनने में आ रहा है कि वो शुरू होने वाला है, लेकिन लोगों को कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसी तरीके से कंप्लीशन ऑफ आसाम सेक्टर बीजी रेलवे फ्रॉम न्यू बंगाईगांव, बंगाईगुड़ी टू जोगीखोपा, अभयपुरी। কেৱল ৰেল যোগাযোগ ব্যৱস্থাই নহয়, ধুবুৰী বন্দৰটো পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ সংসদত দাবী উত্থাপন কৰিছিল সাংসদগৰাকীয়ে। সংসদত যুক্তি দাঙি ধৰি সাংসদগৰাকীয়ে কৈছিল, এসময়ত ধুবুৰী আছিল ৰাজ্যৰ অন্যতম এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই। ধুবুৰী আৰু কলকাতাৰ মাজত পূৰ্বে জাহাজেৰে সামগ্ৰীৰ আমদানি ৰপ্তানি হৈছিল, কিন্তু দেশ বিভাজনৰ পিছত জাহাজৰ চলাচল বন্ধ হৈ গ'ল। জলপথৰ কিছু অংশ আন দেশৰ ভৌগোলিক সীমাত সোমাই যোৱাৰ বাবে নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিল বন্দৰটো, বন্ধ হৈ পৰিল জাহাজৰ চলাচল। ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিল সমগ্ৰ ধুবুৰী তথা ধুবুৰীবাসীৰ ওপৰত।
লাহে লাহে ধুবুৰীৰ সৈতে সংযোগ হেৰাই গ'ল দেশৰ আন আন প্ৰান্তৰৰ। পিছ পৰি গ'ল ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি। সেই সময়ত যিহেতু ৰেল যোগাযোগ স্থলপথৰ সুবিধা সঠিককৈ নাছিল, গতিকে জাহাজেৰী সামগ্ৰীৰ আদান প্ৰদান হৈছিল এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ। सर असम के लोग धुबरी पोर्ट से स्टोन्स, वेजिटेबल, जूट, राइस वगैरह का एक्सपोर्ट का काम करते थे। इसकी वजह से इलाके में बड़ी खुशहाली थी, चहल पहल थी। वहाँ के लोग माली एतबार से बहुत मजबूत थे, फाइनेंशियल एतबार से। मगर सर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मुल्क की तकसीम के बाद, पार्टीशन के बाद धुबरी और कोलकाता के बीच में शिप्स का रास्ता बंद हो गया, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि वाटरवे का कुछ हिस्सा दूसरे मुल्क में चला गया। उसके बाद धुबरी पोर्ट बिल्कुल बेकार हो गया और वो बंद हो गया। सर मैं आपके माध्यम से इसका असर लोगों की ज़िंदगी पर पड़ा, उनकी माली हालात ख़राब हो गई और धीरे धीरे धुबरी और इसके आसपास के इलाके मुल्क के सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाकों में से एक हो गया। सर मेरा क्षेत्र जो है धुबरी उस ज़माने में पूरे आसाम का सबसे चहल पहल वाला इलाका था, जब ये पोर्ट वहाँ तक था। उसके बाद वो अचानक बंद कर दिया गया। सर मैं आपके माध्यम से अपने वहाँ की ये बात करता हूँ कि उसकी वजह ये थी, रोड्स एंड रेलवे के बहुत सहूलियात इस इलाके में मौजूद नहीं थी। उसके साथ ही उसके ज़रिए सामान को दूसरे हिस्सों में पहुँचाना बहुत महंगा हो जाता था। दूसरे मुल्क में भी उसको भेजने की कोई सूरत नहीं थी, इसलिए उनकी माली हालत दिन ब दिन गिरती चली गई। তিনিটাকৈ কাৰ্যকাল ধুবুৰীৰ সাংসদ হিচাপে থাকি ধুবুৰীবাসীৰ কষ্ট মৰ্ম বেদনা উপলব্ধি কৰি ধুবুৰীবাসীৰ সমস্যা দূৰীকৰণৰ বাবে এইদৰেই সংসদত বাৰে বাৰে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। और मुझे खुशी है कि सरकार ने धुबरी पोर्ट को रिवाइव करने के लिए फंड दिया और फिर उससे बिजनेस एक्टिविटी शुरू हुआ, जो मिनिस्टर साहब जानते हैं। सर मगर अभी भी उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, वहाँ मज़ीद सहूलत के लिए फ़ंड की ज़रूरत है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ मिनिस्टर साहब के आपके माध्यम से कि वो इसके लिए फ़ंड दिया दे, ताकि धुबरी पोर्ट एक बार फिर से इलाके के लोगों के लिए बिजनेस पॉइंट बने।